Sir, I'm excuse me, hoping, sir. yes, go ahead. Is tie a necessity for now? Sorry. Is wearing a tie a necessity for now? Like, Not for now, not for now, not for now. However, in the actual interview, we would recommend that you go for it. Okay, leave no stone unturned. sure, sure. Okay. So now let's quickly, get into the discussion for today. I'm hoping that the others who have also joined in can also build up their opinion. In the session today, we are going to discuss pros and cons of budget 25-26. I'm hoping that by now you're all aware. We had shared the document. We had a detailed discussion also yesterday, which we believe you have gone through or you're a part of. So let us then start with the discussion. Let me give you all a quick 1 minute. And at the end of 1 minute, we'll start with the discussion. You would have 15 minutes to discuss the key elements in terms of your thought process. And then at the end, we will have a conclusion. Sorry, sir. This is what I could come up with. No, it's all right. It's all right. It's okay. So we have 1 minute to think and 15 minutes to discuss. Am I right, sir? Yes. Your time begins now. Please go ahead. Okay. So I would like to open the floor by discussing today's topic in the group, that is the pros and cons of budget 25-26. Let us all discuss what were the revised estimates for the year 24-25 and what are the budget estimates for the year 25-26. Along with the pros and cons, I would also urge the group to discuss the consequences of certain figures that have been presented in the budget. If anyone has any other addition to make in the flow of the discussion, they can add to it. We should also take this budget as a long-term perspective and not only on a short-term perspective, but we have to take it as a brief for the vision of 2047 Viksit Bharat. We should also incorporate these points as well. Okay, so firstly, the total amount for allocated for this budget was 50 lakh crores in India, and basically it was a extension of Amrit Kal, which is a new focus on four aspects, which were women, youth, farmers, and I'm unable to remember the fourth one. Yeah, so basically it was focusing on these four sectors. So starting, let's begin with let's take one sector each and then discuss the pros and cons of it. Starting with the agriculture sector, Uh, if you would, let's start with it. So in terms of the agriculture sector, the Kisan credit card limit that has been increased from 3 lakhs to 5 lakhs. So now it's a benefit to the farmers, as now the private players will not be able to engage them in the vicious trap. So that is something, a good initiative that has been taken by the government, I feel. I completely agree with the budget's main focus on agriculture. I believe that we saw in the first advance estimate that there was only a 6.4% real growth in the GDP, with the sectors like agriculture, primarily the primary sector, lagging behind. So, with the government focusing on agriculture, I think it's a great move in this direction, wherein it will help boost the GDP in the coming years. I agree with Focusing that on the definitely. One second, go if I ahead, go speak. ahead. So, Yeah. yeah, so I think increasing the limit to 5 lakhs is a big thing, because we have actually heard a lot of case where, there are multiple farmer suicides, and when they don't get enough loans from the bank, they tend to go to some informal lenders who charge exorbitant interest.
So this step is actually a very positive step for the farmers, and it will in the long run provide a very positive outcome. There is another scheme called PM Dhan Dhanya Yojana, focusing on 100 agri focused district, which not only focused us to see the holistic agriculture, but to focus on a certain type of special seeds that are grown on particular district. It's on the same line, like same on the same districts focused businesses that are occurring right now. So yeah, on the similar lines, some improvements have been made from the last year to the current for the current year. That is on the lines of MSME sector. So for the MSME sector, the limit is just doubled for registering at is it as MSME, and same has been done for the startups as well. And yeah, I think this is a very good step. It will I'm not able to find the correct words, but it will genuinely pursue more development and more growth. Uh, So uh, adding on to, sorry, you are yeah, done. So adding on to that point, with regards to MSME, we have also revised the basis on which we decides what industries are micro, small, and medium. Along with that, we have also made cost and ease of doing business more efficient in our system. And second, and the last point with regards to MSME is that we have also promoted inclusive entrepreneurship. Whereas when we are giving support to women and SC/ST entrepreneurs. Yeah, Okay, So adding not to adding to my Advika's. co-panelist point, Okay. as the revision of MSMEs, the micro enterprises are revised to 2.5 crores, and the small enterprises are revised to 25 crores, and the medium enterprises are revised to 125 crores, which will add more businesses on the board of MSMEs, and will yeah. Now let's Adding to come on further, to okay, okay. You can. yeah, just adding to this, there is a major development in terms of the FDI. So the FDI has been increased to 100%. So now it will also give the foreign players an advantage to work in this state and also to invest plus add their manufacturing units. So it will also be a part of the Make in India that they will parallelly build on this. So it's a major step that we can find in. I would like to add on that FDI was increased from 74% to 100% in the insurance sector, basically. And I would like to come to a point. One of the main objectives of Budget 2025 was to increase private consumption and private savings. This was done through by increasing the income slabs, for which we have, as a taxpayer, we have to pay no tax until an amount of 12 lakh if we are a businessman, and 12 lakh 75,000 for the salaried employees. yeah. On Okay, so the coming to I the would like point to of add a point here. There were measures go taken for labor-intensive sectors like toy making and LED TVs. There were also support for food processing sector. So that was also added as part of this. so adding to coming the to the point income tax point, I would that like to add a yeah. thread here that like we have a 50 lakh crore of budget of spending and only 34 lakh crores of in like investment in the government. There is a huge physical deficit in our budget already, and the cut of income tax will strain 1 lakh crore more on our fiscal deficit. And also due to the extra disposable income, there is a threat of inflation as well in the India. But still, I would like to add on to this point. I would like to disagree on this, to be honest, because a fiscal deficit is necessary in an economy. There should be a fiscal deficit, and our revised targets are to 3.9%. Currently, we are at 4.4% of fiscal deficit. So I think considering our economy, amount of 16 or 15 lakhs of 15 lakh crores of fiscal deficit can be adjusted because we have such a huge economy. And Also adding to this, the capex in expenditure has also been increased by the government. So in the industrial sector from 13.4 to 15.5 lakhs crore. So this capex investment will also somewhere boost the
I will say the industries in this terms, and also increase our daily consumption and production pattern also. I would Yeah, like to completely add to agree. the income tax point. So it is right that I think around only 2.2% of the people out of in the whole population of India pay the income tax, and the government introducing this no tax up to 12 lakh is actually a good thing according to me, because although they would lose 1 lakh crore worth of direct tax, as my colleague pointed out. But I think the people will have more amount in their hand to spend, and they will invest it, they will buy goods, or they will give give that back to the economy itself. And in return, I think it will give the GDP a boost. So I think But it's a double-edged sword. So decrease one where will increase the, but I think Aditya, that's one thing I would like to point out here is, even if we are decreasing this slab, increasing this slab to 12 lakhs, and the amount of expenditure that we are thinking that the middle class is going to save, but in case it has been historically found in the 2008-2009 crisis also, majorly the focus of the middle class is then goes towards the investing sector, and they invest most of their income, and that leads to a financial deficit there. So that's why there is a bit of trade-off, I will say, in terms how much we are going to expend that the government is thinking. So Even if in the the interest Now of consumption the time, we have now the just narrative has one changed. minute. I think we are getting into details. In the interest of time, we have already discussed a lot of pros of the budget. Let us now jump to certain cons, or something that we feel are Okay, important subjects that need to be highlighted about the budget, so that we Yeah, could quickly. let's come to yeah. the So let's the talk on funding for the railways, the budget for the railways has remained the same, and that I think is a major con, as we have seen the railways is introducing new trains, but there is also need for maintenance of that, and to maintain the tracks. It's just not applicable to it's just not important to introduce new trains. It is equally important to introduce that type of tracks that can hold the running speed of the train that it is capable to run at. And yeah, keeping the budget for the railways the same, it is a major con in that reference. another major guys. drawback that I feel is Also adding a point that we are education in a risk of and two-front war. Excuse me, just give me a minute. We are in a risk of two-front war from the China and Pakistan, as well as the Bangladesh is becoming adversely hostile for us. So there is a need for $100 million budget for defense, which is also we boost our defense budget right now, but we are not anywhere close to the $100 million budget for our defense sector. It is But then also a point of mostly consideration for you. Yeah. I would another like major to drawback that I feel yes. is the less distribution in the education in the health sector, with only 2% and 1% respectively being allotted to that. With the demographic population, with the upscaling being a priority, which should be a priority for the population right now, I think with only 2% allotted to education is extremely less, and this is something that could have been increased in this budget. I agree to So On the with expenditure Siddhant. front, India One has second, one second. allotted. I would like to speak. So Yeah. basically, Siddhant put forward a very good point. Education and healthcare. I think it is the human capital which requires the most amount of attention. And I think the government should work more on allocating more funds for that, because the more we educate our younger youth, because India is a very young country, so we need to educate and provide good healthcare from them. Moving from that point, I would also like to point out, talking in dollar terms. So I think India has allocated $17 billion for R&D. But I would like to just put out a number in comparison. We compare ourselves, let's say, to China. China allocates $500 billion in R&D.
given that this AI emergence is happening, I think we need to do a lot more in adding to, especially in R&D structure to, if we want to compete with the superpowers. So yes, I would like to point that. I agree with my co-panelist, wherein he talks about how we are losing out on allocating appropriate amount of budget to the R&D or for the development of AI. Along with that, I would also point out that our estimated budget for the year 24-25 was 50,000 crores for disinvestment in the PSUs, and we only reached 33,000 crores, which is something that we are lacking on. And for the next year, that is 25-26, we have estimated 47,000 crores. I believe the government should be more a critical point here is that market was an all-time high last year, and the government should have been proactive in the disinvestment part. And seeing the number fall from 50 to 47 is a little disappointing, and I believe the government should take more proactive role in the disinvestment of PSUs which are not profitable. Okay, guys, So now that's Also, why the extra focus on the Bihar due to some political advantages that they can gain, be it the IIT expansion of IIT Patna or the Makhana board, especially in the Bihar, also gives a extra emphasis to a certain state and can discriminate other state in the budget. but Okay, guys, now adding to let's the talk point, on the things which are now more expensive after budget 2025 and which are less expensive compared to the last year. So I would like to point out the things which have like the tax and the duties are reduced. So basically there are many things, but most important ones are the EVs, the batteries, and the pharmaceutical drugs, the chemicals, and the autos, which are like public transport, constitution, a part of public yes, transportation. So yeah, the basically the government has listed down the list of 30 essential minerals, which includes lithium as one of its component, which is heavily relied for the EV industries. And adding to one more point, the public sector not doing good. So the government has also introduced the scheme of the asset monetization, which it has been doing from the past year, and now it is investing more in it. So it is going to take under some of the public sectors like the airports or some of the companies, and then leasing it out to the private vendors. So I believe this kind of setup will further improve the deficit. So since we are in our very last segment of the budget discussion, to overall, as a summary of this group discussion, we are all in all happy with the budget estimates that we have for Before 25-26. summarization, I just want to put one more point. There is a Yes. special emphasis on the nuclear energy, and we are set to 100 gigawatt of nuclear power in terms of our 2047 Viksit Bharat vision. There is a special emphasis on nuclear energy right now, and we are also in the talks with Russia for this nuclear energy power. I think I would like to Also, I want to conclude here add by one point saying here. one more I point want that there are many amounts allotted to neighboring countries such as 100 crores to Afghanistan and 500 crores to Maldives. So like this, India is strengthening their international neighbor relations with neighboring countries, which can be an advantage to us in near future. So overall, I feel budget has been a good I will say a good, like it was forecasted in the economic survey as well. So budget comes in along the terms of the economic survey. So one I of think our it's a co-panelists were trying to say something. If you would like to go ahead. I would like to say one thing. Even though all of us believe that this is a more consumer-centric budget that we got, but one part of our population that got neglected as part of it were the poor. The amount of employment generation that was expected was not there in this particular budget. Even though we think that increasing the tax slabs would reduce the tax. But if we have more people above the tax slab, we have more employment and more people getting the part of the tax paying slab, that was also be also essential, which was not taken so much benefit, which was not given so much attention in this budget. So I good agree with point. you, but According, is it okay if I go ahead and summarize? Yeah, go So- ahead. Yeah, go ahead. So all in all, we are all very happy with the budget. Just a second, And Advika, just a second. Dhruv, why don't you summarize the discussion?
sir, I was not part of the initial discussion, but overall, I believe that the budget is very positive for our nation. We got a lot which was expected, but there were areas of concerns as well, where it went ahead and improved the middle class section. It specifically improved the middle class section by increasing the tax slabs. It incorporated multiple initiatives to add value in the education sector, but again, areas of development were left behind where the amount allocated to education was not as far as the other developing countries. Other than that, like I pointed just before, poor were neglected as part of this budget, which could have been incorporated because the poor section of the population consists of a bigger part of population. The middle class, even though middle class is something which gets neglected in most of the budgets, it is still a lower percentage of the entire population. So I think that was something that got neglected. Also, Bihar and other state elections had some kind of influence, directly or indirectly, we can't say, but a lot of influence was due to the coming elections, and we can easily see with the incorporation of additional seats in IITs, IIT Patna and other IITs in that region only. Okay. All right. Thank you, everybody. I'm hoping that you've all had your share of fun in the discussion. I think a very good discussion, very well prepared. I think it was very well coordinated also. I think good work, Advika, in terms of coordination, and also Parth in terms of adding the points in a very crisp manner. Very specific pointers and very crisply put is something which I truly appreciate, in this discussion. So that was brilliant. So good work, on the pointers. Although everybody else was also good and prepared, but I'm starting with people who have, made a remarkable mark in this segment. I think beginning with understanding the pros and cons, the team was able to manage the time pretty well in terms of dedicating time towards each. The best part was, when agriculture was being discussed, then agriculture, and then, dedication to MSMEs, and then movement into private consumption, and discussion of important elements. One or two fallouts where, while the pros were discussed, or the pros were getting discussed, the cons would not have to be taken into account. I think Kuldeep started pointing out about the issues, the risk of inflation, fiscal deficit, that was to be accounted in cons. Right. So when the structure of the discussion was initially decided, then the team was absolutely clear that the pros have to be listed first and then the cons. So that is something which is not to be done, Kuldeep. And then when the cons are being discussed, you are again talking about pros. I have one more point I will add, and that is a pro. That's actually not a con, right? So the pros have been discussed, the cons have been discussed, and finally the conclusion has to happen. Correct. Dhruv, very few entries. Okay. So you need more entries into the segment. The topic was a very familiar one. It's not a very new topic or something that you're not a part of. So a few more entries would be better. Okay. So take more initiative, try to participate. And I think if not for Advika, you would not have gotten the last opportunity also. Correct. So you have to come to the forefront, give it that fight, because if everybody is able to participate, then we should be able to participate as well. Okay. Overall, as a team, I think we did very, very good. Some of the elements were not very clear. Correct. For example, first part, Advika, when we start, we do not only give an intro and a structure. We also have to add some more value to it. Okay. Rather than only doing an intro. है ना कि मैंने अब तो स्ट्रक्चर दे दिया, अब देख लो क्या करना है. ठीक है. So add some value also. Do not make it only an intro. Okay. So I think if we talk about in the initial part, the agriculture was discussed. Then Siddharth. Siddharth, I think a few more pointers would have been better. Although the pointers were very crisp and precise. I think you made one entry. And then you had made second entry where you talked about education and healthcare.
I think only 2 pointers. Yes, sir. Correct? That is a little too less. Okay, so in a topic where everybody is talking so much about everything, give it your fight, participate a little bit more. Okay. Right? That is again very important. Okay. Okay. One more point which was discussed was ease of doing business. Okay. So somebody, I think Adhika talked about ease of doing business, is being prioritized, is being, taken care of. But what is the current standing? What is the current number in terms of ease of doing business? What is it that we are looking at this point in time, or whatever last data that I had, whatever 143 or 145, the number is, that is the number that we are looking at. Okay, and also what is exactly happening in terms of ease of doing business? Some of the elements have been, taken care of, but to understand where do we stand at this point in time is an important element to add in that case. Okay. Again, one pointer was FDI of 100 crores. Again, that point was not very clear. So, for example, FDI being increased to 100 crores, what does it mean? How does it actually impact? Okay, 100 crore का revenue है, 100 crore का exemption है, 100 crore का budget है, क्या है 100 crore? Correct? To put the points across very clearly, has to come out very clearly, even if you know it. But if the panel, does not understand your thought process, then it is not not going to help. Okay. Okay. Somebody talked about Aditya. You talked about fiscal deficit. What's the number that you mentioned? Aditya Agarwal. So I mentioned about the percentage. What's the percentage? 4.4%, sir. 4.4%. Yes, sir. Okay. Out of what is the base? So of GDP, which is 3.5 lakh trillions, 3.5 trillions lakh crores. 3.5 trillion lakh crores. No, sir. Lakh crores or trillions, whatever we can use. So No, you tell me only one unit. No, don't tell me multiple units. Tell me one unit. 3.5 lakh crores. 3.5 lakh crores. So what is 4.4% of 3.5 lakh crores? So around, I would say 15, 16. 15, 16. Yeah. 15 lakh crores. Yes, sir. Okay. Can you tell me what is the the revenue receipt and the revenue? The 15, 16,000 crores. Okay, 15,000 crores. Yes, sir. Out of, if I see, if 3.5 lakh crores. You are saying 15,000 crores is the fiscal deficit. I'm sorry, sir. I'm getting confused. Wait, give me a second. Yeah. So the base is GDP for sure. Our GDP is $3.5 trillion. Let me be clear. And yeah, so 4% will be, give me a second. But Aditya, I think it's a ratio rather than a percentage. Yeah, Fiscal no, it's a deficit. percentage of the GDP. Okay. I'm quite sure So about. what is the GDP? So like in real terms, in nominal terms, it is 3.5 lakh crores. 3.5 lakh crores. Yes, sir. That rupees or dollars? So dollars, US dollars. 3.5 lakh crore dollars. Okay. So then, in rupees, what is that number? I'm not sure, sir, because GDP is calculated in terms of $1 trillion. Yes, sir. Okay. And then 4.4% of that number is what? What number? So let me calculate. So actually, it's a fiscal deficit always talked in terms of percentage. We talk about the interest payments, like it's 20%, like 20. What is fiscal deficit? So fiscal deficit basically the interest payments means interest payment made on, like it is basically the total expenditure of government minus the total revenue of governments. But in this, we also include the interest payments we make on government debt. That is true, obviously. Yes. So Yes. basically, your fiscal Primary deficit plus interest we pay. सब निकाल, सब लगा दो. फिस्कल रेवेन्यू और फिस्कल एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट होता है. Yes, sir. ठीक है. Yes. The projected fiscal deficit is at 3.3%. Okay, sir. Yes, sir. I haven't got it. So that number, you can check, that number is not matching with the number that you mentioned. Okay, so number, yes, Kuldeep, go ahead. Sir, actually, I have also read 4.4% as a fiscal deficit. So let me, अब again, तुम The 3.9 is expected in there are two numbers. देखो सबसे पहले दो चीजें कि what is the Yes. base that you are taking. Okay, there can be 2-3 elements. One is the nominal GDP, one is the real GDP, and the other one is your fiscal investment or fiscal expenditure.
तो आप इसमें से कौन से वाले पे निकाल रहे हो उस हिसाब से वो सर नंबर जीडीपी बहुत पे क्लियर निकलता होना है ना चाहिए सर? तो दैट number So, has to sir, okay so sorry. tell So me the net fiscal deficit is 16 lakh crores. 16 lakh crores and 16 lakh crores is 4.4 We have a total revenue of so Kuldeep 16 lakh crores is is around 3.6 lakh 4.4% of crores. what number 16 lakh Sir, crores 4.4% किसी नंबर का होगा ना वो कौन सा नंबर है सर जीडीपी का ही होता है सर फिजिकल डेफिसिट लाइक GDP का ही है सर, तो बताओ GDP का ही है. तो बताओ जीडीपी क्या है सर 3.5 ट्रिलियन Just यूएस करो डॉलर्स ना Sir, सिंपल GDP, कैलकुलेशन है it's not US dollars, it's INR. भाई मेरे sir, अरे नहीं ट्रिलियन डॉलर्स होता है GDP is 357 lakh crore और उसका एग्जैक्टली 4.4% is 15 lakh 69,000 crore. Yes. correct correct so 16 lakh that so basically that is what I'm saying primarily look at the numbers very very clearly ठीक है कि तुम कौन सा नंबर ले रहे हो और कौन से नंबर का तुम 4.5% निकाल रहे हो So, ठीक sir, है when you say that 3.3%, what are we talking about then? So 3.3% is the difference in terms of revenue receipt and revenue expenditure. So there are two types of elements. एक तुम्हारा revenue receipt and revenue expenditure है, and there is one more element which is your capital expenditure and capital receipts. उन So that दोनों will be revenue deficit. revenue minus revenue. So basically your revenue deficit combined with your capital deficit overall is 4.4%. एग्जैक्टली Okay. So Yes. be absolutely clear with your numbers and if in case you have to calculate also and show should be very sure मतलब वो ट्रिलियन डॉलर के कैलकुलेशन में नहीं फंसने का रुपीस में रखो आईएनआर में रखो हमने सारा कैलकुलेशन आईएनआर में किया है ठीक है सो इनफैक्ट द डिस्कशन दैट वी हैड everything we had done on INR so let's keep it that way okay so I'm hoping that part is clear coming to another important element is just a second Okay, Puneet, one more point. The delivery speed is a little slower. Would you agree with me? Yes, sir, definitely, because I am not able to articulate it at that time. Yes. So the delivery has to be faster a little bit. Okay. So the delivery part has to come in more swiftly, and then we have to move forward. Okay. So that is an important element. Okay, sir. Okay. All right. So that element has also been taken care of. Okay. Acha, one more point. When there are so many points to talk about, okay, general thought processes do not build up on the others' points until and unless it is absolutely necessary. ओके तेरे पास ऑलरेडी इतना पॉइंट है कवर करने के लिए दूसरे का पॉइंट लेके बिल्डअप करके सामने वाले को ब्राउनी पॉइंट्स नहीं देने का ठीक है इफ यू आर बिल्डिंग अपॉन समबडीज पॉइंट्स यू आर गिविंग देम ब्राउनी पॉइंट्स पॉइंट्स की कोई कमी नहीं है सो देर आर सो मेनी पॉइंट्स तुम कितना भी डिस्कशन कर लो कुछ ना कुछ छूटेगा ही करेक्ट सो ट्राई टू ब्रिंग इन मोर पॉइंट्स एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन Excuse me, टॉक sir. अबाउट So I would like to ask you something गो on अहेड this. गो अहेड Yes, sir. Like as you said, we shouldn't add on now, like when we have so many facts and numbers. So, but someone stated like the in this budget, health expenditure पे total like expense कम हुआ है. Like but sir percent तो बड़ा है sir. Health expenditure तो overall बड़ा है. Education में I can agree, but आदित्य ओवरऑल तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है तो yes, इज इट sir. गुड थिंग और बैड थिंग सिर्फ बढ़ जाना काफी नहीं है आदित्य So that is a different like sir वहाँ पे state I agree कि हाँ health अभी भी like we are lacking.
बट सर पिछले बजट से लाइक वी हैव लाइक उस लाइक नॉमिनल टर्म्स में तो हमने इंक्रीज किया ना सर. नहीं, आई एग्री विथ यू. पर एक सेकेंड, टॉपिक जो आज का डिस्कशन का है वो ये है कि इज द बजट गुड और बैड. ये डिस्कशन नहीं है कि विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट ईयर अच्छा है कि बुरा है. करेक्ट. सो इफ आई एम लुकिंग अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मान लो कि भाई मैं बहुत ही शांति प्रिय इंसान, मैं देख रहा हूँ कि 8% डिफेंस में बजट जा रहा है और हेल्थ केयर में 1% आ रहा है, एजुकेशन में 2% आ रहा है, तो मेरा तो ऑब्वियसली मुझे लगेगा ना कि यार ये डिफेंस में इतना जा रहा है और एजुकेशन में नहीं आ रहा. सर डिफेंस में 13 है ना. ओवरऑल डिफेंस में 8% एक्सपेंडिचर है, लगभग लगभग तुम्हारा 5 लाख करोड़ के आसपास. ओके. ठीक है, तो अगर हाँ, सो द थॉट प्रोसेस वेरी सिंपल है कि यू विल, आई एम नॉट सेइंग कि डिफेंस में स्पेंड नहीं होना चाहिए, डिफेंस में स्पेंड करना जरूरी है बिकॉज देर आर थ्रेट्स ऑल अराउंड. That is again important because a lot of things happening around. Donald Trump is active and whatnot, right? The globe, the geopolitical stage is all set for a lot of drama and Instability right now. yes. So a lot of interesting elements are going to happen on that stage. But defense is important. But again, you have to think as to how are you going to boost education. If you do not boost education and you do not boost manufacturing, then the entire demographic advantage that we talk about becomes a liability. Simple. Correct. So again, that is something which we have to. Healthcare is important because if you actually go back to the COVID era, right? The initial blow was actually very devastating because of the infrastructure issues that we had in terms of हॉस्पिटल्स एंड प्ले ग्राउंड को आप हॉस्पिटल बना रहे हो, ठीक है, मैदान में लोग हॉस्पिटल लगा दे रहे हैं. That's it. ऑल ऑफ दैट इज समथिंग which has to be taken care of. Correct. So I think that is something which we talked about. Okay, so I'm hoping that part is clear. I think good points on EV industries and asset monetization. Again, it's a good one. Okay. All right. So I think overall that's my pointers. I think everybody did well. I think we can all I think the every individual element was very very good. Beyond the individual elements, I think Siddharth, a little more participation is required. Kuldeep, I think a few areas where I found that some logic had to be built in. Okay, so you had mentioned that $100 million for defense. Yes, sir. What is the logic? Sir, there are several reports floating around from last several years, like few years, that India should have a minimum $100 million budget. Why? Uh, for like sir, as China is expanding near LOC, LAC, But and Pakistan is always a threat. Kuldeep, I Yes. understood. You also know my question, but you are just moving around and beating Yes. around the bush. Sir, Why? actually, I am 101 not कर देंगे तो शगुन quoting मिल this. जाएगा. हाँ, 101 कर देंगे तो शगुन नहीं, हो जाएगा. actually, I am not quoting this amount. नहीं, sir, actually, I am not quoting this amount. The various, basically, the newspapers or the sites which are doing research on their own on Don't. defense, they So are quoting this सर $100 चाइना million से तो amount. पीस हो गया सर. हमारे जब वो विक्रम मिस्री सर अब गए तो अब तो पीस हो रहा है थोड़ा सर. अब तो चीजें नॉर्मलाइज हो रही है. सो नहीं, so But always a chance of backstabbing. नहीं वो बैक sure, but स्टैबिंग है जो भी है भाई, $100 million का कोई लॉजिक होना चाहिए. अगर आपसे वही क्वेश्चन पीआई में Uh, पूछ, आपका जीडी या जीई के बाद वही क्वेश्चन पीआई में पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे? रैंडम रिपोर्ट से पढ़ के आ गए. कौन सा रिपोर्ट है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन? Sir, it's not random reports. Several newspapers are quoting this amount. I'll study about it more. But What it's is a the basis. The amount is on a basis, sir. what is the logic of $100 million? कैलकुलेशन बता दे चल. Yes. $100 million का Sir, I'll कैलकुलेशन. read and get back to you. तो Sir, I'll read about it and एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. बिना लॉजिक के तुम रैंडम नंबर फेंक रहे हो. ठीक है, डोंट डू दैट. दैट इज नॉट समथिंग विच कैन बी अप्रिशिएटेड. वो सामने वाला अगर पीआई में इसी बात को पकड़ लेगा तो ग्रिल कर देगा कि तुमने $100 million बोला था, कैसे बोल दिया, क्या नंबर, क्या कैलकुलेशन, क्या है. एवरी नंबर you speak, you should be absolutely clear of the source and the calculation.
4.5% बोल दिया, 5% बोल दिया, 6.4% ग्रोथ है। 6.4% ग्रोथ है अगर, तो क्या नंबर था लास्ट ईयर, अभी क्या नंबर है? करेक्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज समथिंग विच इज Yes. इम्पोर्टेंट। जीडी वाला मुद्दा पीआई में उठाया जा सकता है, तो डू नॉट एक्चुअली से एनीथिंग एट ऑल। ओके, कुछ भी बोल दिया ऐसा रैंडमली नहीं निकलने देगा, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके। सर एक Okay. बोलना था सर, डिफेंस का तो सर 13% है ना सर बजट का, आपने 8 बोला, लाइक एक इफ मिनट, रुक जाओ। देखो, सबसे पहले अगेन तुम कौन से बेस पे कैलकुलेट करो, लेट मी शो यू समथिंग। लाइक टोटल एक्सपेंडिचर का करते हैं ना डिफेंस, तो हम जैसे एलोकेट, रुको रुक जाओ, रुक जाओ। जैसे हम बोलते हैं 2% एजुकेशन का है। ओके, इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। आओ आदित्य, कैलकुलेट करते हैं, ये नंबर ले लो। 5 लाख करोड़ सर। यस सर। अब टोटल एक्सपेंडिचर बताओ। 50 लाख। 50. हाँ, तो कितना परसेंट हुआ? सर बट लाइक जब हम एलोकेशन वैसे देखते हैं सर, लाइक जो हम 2% एजुकेशन बोलते हैं जब, तो बेसिकली आदित्य देख, बेस तुमको समझना पड़ेगा कि बेस तुम क्या ले रहा है। अगर सर फॉर इसमें तो बेस एक ही होता है ना सर, टोटल एक्सपेंडिचर लाइक। टोटल एक्सपेंडिचर भी लेता है, कई बार जीडीपी भी ले लेता है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बोल रहे हो तुम, या एज उसमें भी कई बार कैलकुलेशन में रियल जीडीपी ले लेता है। अरे बाप ठीक है, तो तुझे मतलब यू हैव टू बी वेरी क्लियर, तुम अगर कोई परसेंटेज बता रहे हो, आउट ऑफ रियल जीडीपी बता रहे हो, आउट ऑफ नॉमिनल जीडीपी बता रहे हो, आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बता रहे हो। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से जो तुम्हारे डिस्क्रिशनरी है उसको भी निकाल देता है। अब तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर तो तुम्हारे पास कोई चॉइस है नहीं। अच्छा, तो आउट ऑफ दैट हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट तुम्हारा लगभग लगभग 20% तो 20%। इंटरेस्ट है। यस सर, तो हाईएस्ट। वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। तो कई बार उसको निकाल के परसेंटेज बताता है कि जो हम स्पेंड कर सकते हैं एक्चुअली, यस सर। उसमें से हम कितना स्पेंड कर रहे हैं। तो ये परसेंटेजेस कई बार थोड़ा वेरी कर जाते हैं, पर अगर तुझे नंबर मालूम है ठीक ठाक, एंड यू ऑल्सो नो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं कर लूँ, देन यू आर, ठीक है। ऑल राइट। सो आई एम होपिंग दैट Uh, यस, गो अहेड। सी एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन? Yes. Sir, one more sir, point. one more point. अच्छा, गो अहेड। Yeah, I just want. Yeah, go ahead. Go ahead, Parth. Go- Okay. Yeah. Sir, there was one point raised ki it is a deficit budget and a deficit budget is required हाँ, for ये a ये health. ये पॉइंटर मिस हाँ, हो गया, ये किसका पॉइंटर? हाँ. मैंने बोला था सर, ये क्या? फिजिकल डेफिसिट व्हाई रिक्वायर्ड इज, होता है सर। सो आदित्य, टेल मी व्हाई budget fiscal deficit is important. सर बिकॉज गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर लाइक ऐसे एसोसिएशन सर, फिजिकल डेफिसिट इज लाइक आइडियल फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं सर 2 to 2.5% होना चाहिए। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है सर कि कोई भी कंट्री का फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। नहीं, इट शुडंट बी। फिस्कल नहीं, अगेन देखो, फिस्कल डेफिसिट का एडवांटेज क्या है ये बताओ आदित्य। सर लाइक आपके एक्सपेंस ज्यादा है आपके रेवेन्यू से, अगर आप फॉर एग्जांपल सर गवर्नमेंट है, इफ लाइक सरप्लस में होती है, फिजिकल सरप्लस में चले, तो सर इसका मतलब आपके एक्सपेंस, आपने एक्सपेंडिचर उतना किया नहीं है सर। वन मोर थिंग, जो फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, ठीक है सर, जैसे 4.4% एंड वॉट एवर इट इज सर, ऑब्वियसली वी नो कि हर साल उतना मीट भी नहीं हो पाता है। मतलब 50 लाख करोड़ का जो हमने वो दिया है वो भी मीट नहीं हो पाता है सर। सर अगर हम उसको ही सुन लिए, अगर मैच भी करते हैं सर, उतना भी अगर हम एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो सर ऑब्वियसली कंट्री के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट शुड बी इन फिजिकल। और सर ये तो दिया रहता है कि 2.2% ऑफ योर जीडीपी सर, एक आइडियल रेट है। नहीं, एक्चुअली 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 यू आर राइट आदित्य इन सेइंग कि फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। हाउएवर द डेफिसिट राइट नाउ इज अबव द बार। यस सर, बोलते बार आई एम सेइंग टू। It's above the bar. That is number one. Number two, matlab, see two things. One is fiscal surplus. Fiscal deficit effectively implies that there is nothing left, and everything that I have is being sort of utilized. However, there is a catch, Aditya. Okay, and the catch is that you can't be in fiscal deficit after borrowing. ठीक है, सो बेसिकली तुम अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू आर डूइंग बोरोइंग आल्सो, देन द फिस्कल डेफिसिट इज अ चैलेंज।
अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू आर मीटिंग द your fiscal targets or your fiscal consumption basis without your borrowing, with your taxes, without without revenue receipts, capital receipts that you are getting, then it is good. बट बोरोइंग करके 20-25% फिर भी डेफिसिट में अगर आप जा रहे हो, दैट्स अ रेड फ्लैग। तो सर हम जब फिजिकल डेफिसिट, एग्जैक्टली सर, फिजिकल डेफिसिट जब हम कैलकुलेट करते हैं, अगर आप ऐसे देखिए तो सर 20% तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाता है, बट उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो सर ऐसे 80% बच गया हमारा टोटल एक्सपेंस में। एंड सर उसमें भी लाइक अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अलॉट किया गया तो उसका 50% ही बस स्पेंड हुआ है। तो करेक्ट सर ऐसे भी पूरे टारगेट्स मीट नहीं होते। करेक्ट। दैट्स वाई सो उनका मतलब होना नेगेटिव सही है। सो भाई सो बेसिकली लगता है जो थियोरेटिकली जो 2 से 2.5% का जो नंबर है, हाँ, that number should happen, but if that number happens without borrowing then it is better. अगर वो borrowing के साथ भी हो रहा है then it is a problem. That is number one. And number two, second important element is कि देखो तुम्हारा for example let's say fiscal, अगर तुम fiscal surplus में हो तो you can take care of whatever opportunities or whatever issues or bigger problems that might come into the economy during इन्वेस्टमेंट। the period. अब जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आ गया, तुम फिजिकल डेफिसिट में तुम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, और लंबा फिजिकल डेफिसिट है। करेक्ट। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज के लिए या ऐसे परेशानियों के लिए, आपदाओं के लिए थोड़ा सा फिजिकल मीटअप होना जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से हम इसको और मिनिमाइज कर सकें तो दैट इज इवन बेटर फॉर द इकोनॉमी। प्राइमरली थोड़ा बहुत ज्यादा सरप्लस इसीलिए अच्छा नहीं होता है बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल हमने फाइनेंस में भी पढ़ा था कि अगर आप फॉर एग्जांपल कैश लेके अपने बैंक में रखते हो तो आपको जो शेयर होल्डर्स है वो पिनलाइज करते हैं। करेक्ट। आइडल कैश इज नॉट। जैसे आपको यहाँ पे सरप्लस भी बहुत ज्यादा लेके चलना अच्छी बात नहीं है सरकार के लिए, लेकिन आई वुड नॉट से कि इतना हैवी बोरोइंग, 24-25% बोरोइंग। अच्छा, बोरोइंग कहाँ से होती है? एनीबडी नोस वेयर डज द बोरोइंग हैपन फ्रॉम? द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, ओके, व्हाट एल्स? फॉरेन बोरिंग्स, फॉरेन कंट्रीज से हम लेते हैं। फॉरेन, ओके, व्हाट एल्स? ये तो वर्ल्ड। सर जो वो बेच उसको एसेट्स को बेच के दे मीट अप देयर फिजिकल डेफिसिट्स, पीएसयूज वगैरह को लिक्विडेट करके। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट एल्स? इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सोर्स है पेंशन फंड्स। हाँ, पेंशन फंड, राइट। यस, पेंशन फंड्स, यस। तो हाँ, सो बेसिकली व्हेनेवर यू ट्राई टू इफेक्टिवली सी कि ये बोरोइंग्स जहां जहां से आ रहा है ना, these are very strict funds, very strict funds, because obviously if foreign bodies are lending you, you will have to pay it back. If let's say you are divesting PSUs, disinvesting, that's a very important element because you are giving that to private and making a mess of the commonwealth. And again, pension funds are sacrosanct. आप एक्चुअली उसको आपको लौटाना ही पड़ेगा. So all these elements with borrowing is something that we have to be very very careful of, right? So that's pretty much about it. सर बट ये तो फिर सर, आई जस्ट लाइक टू आस्क यू समथिंग। सर जो हम नेबरिंग कंट्रीज को ग्रांट्स दिए, 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, कितने बांग्लादेश को दिया है, 10 कंट्रीज को दिया है कम से कम। तो सर ये तो लाइक एक, हाउ टू से, मतलब ये तो वो एक्सपेंस है ना जो कर हमारे ऊपर था नहीं करना भी, लाइक राइट नाउ रिक्वायर्ड नहीं था। बट अगेन अगर लाइक इंडिया चाहती तो कंट्रोल कर सकती थी फिजिकल डेफिसिट, मतलब थोड़ा कम तो कर ही सकती है। अब थोड़ा कम कर सकती थी। अभी डिज्नी हॉटस्टार ने भी जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच है वो फ्री चलाया था। हाँ, अभी चल रहा है सर, मतलब आज ही है ये हाँ, सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर ये तो प्रमोशन है सर। डिज्नी हॉटस्टार अभी फॉर एग्जांपल डिज्नी हॉटस्टार जो है वो पिट गया था बिकॉज ऑल द पीपल वर एक्चुअली मूविंग टू जियो सिनेमा। इवन फॉर क्रिकेट नाउ पीपल वर मूविंग टू जियो सिनेमा। उन्होंने जियो सिनेमा के ऊपर भी हॉटस्टार का ऐड लगवा दिया। डू यू तो थिंक मर्ज हो गया ना सर, जियो एंड डिज्नी हॉटस्टार। क्या क्या? जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार तो मर्ज हो गया ना। सो बेसिकली डू यू थिंक इट इज एन एक्सपेंस और नॉट? इट इज, समझ? मतलब हाँ। So basically, why is it happening? To regain, the subscribers. ठीक है, that's the reason why it is happening. तो तुम्हें भी अगर for example, let's say for countries like India, okay, इंडिया को भी सब कॉन्टिनेंट में अपना दबदबा बनाना जरूरी वो है. तो इंडिया is देना not चाहिए। a mediocre country. India is going to be a superpower. So we have to invest properly. That is something which is important. It's an investment. I do not look at it like an expense. ओके, फिर
Yeah. Kuldeep, go ahead. तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो 100 गीगावाट वाला पॉइंट था सर, मेरे को हाँ वो प्रोज में रखना चाहिए था, बट मैं भूल गया था, मतलब मेरे को लास्ट में क्लिक किया। एंड नाउ अद्विका इज कंक्लूडिंग इटसेल्फ कि नाउ वी आर ऑन अ कंक्लूजन, सो आई हैव टू टेक इट पॉइंट, क्योंकि ये सर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्योंकि लॉन्ग विजन में ना किसी ने भी कोई खास ऐसा पॉइंट रखा नहीं था जो विजनरी पॉइंट हो, एंड इट्स वन ऑफ अ विजनरी पॉइंट, तो इसको कैसे रखूं फिर मैं उस टाइम पे? तो बेसिकली आई थिंक, सी, टू थिंग्स कुलदीप, तुमने रख दिया अच्छी बात है, लेकिन जहां रखना था वहां नहीं रखा। तो हो सकता है उसमें जो एक पॉइंट मिलने सर उस वाला, टाइम क्लिक नहीं हुआ था एक्चुअली। हम वही कह रहा हूँ कि वो जो एक पॉइंट उस यस पर सर। मिलता शायद वो 0.5 ही मिलता फाइनली, इफ यू पुट इट इन द रॉन्ग प्लेस, बट यू डिड द राइट थिंग टू इफेक्टिवली ब्रिंग समथिंग which was relevant, correct? But if we can sort of put it where it belonged, it would have been better, right, Kuldeep? एंड सेकेंडली सर अभी मैंने दोबारा सर्च किया द Is it हंड्रेड only with बिलियन डॉलर agriculture, or बजट, is it only with इट्स देयर सर, देयर आर सेवरल साइट्स विच शोइंग only with हंड्रेड agriculture? बिलियन डॉलर बजट, बट कहीं भी मेरे को क्लियर कैलकुलेशन नहीं मिल रही। कुलदीप, हाँ, आई कैन शेयर द जो स्क्रीन अभी एंड शो हरकत इट टू जो यू। तुमने हरकत ली, सॉरी, जो अभी योर वॉइस इज क्रैक। तुमने मूर्खियां अभी ली हैं, हरकत जो तुमने सर ली, एक्चुअली माई पहली इंटरनेट इज, वाली। सर माई इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, कोई बात नहीं, हेलो, तुम या चैट आई में, एम, चैट में लिख दो भाई, कोई बात नहीं। So can I? हाँ सर, मतलब आई सर्च अबाउट दैट $100 million एंड इट्स देयर ऑन सेवरल साइट्स, बट कहीं भी कैलकुलेशन प्रॉपरली नहीं है, बट ऑन मेजर साइट्स एज वेल, इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑल, दे आर क्लेमिंग दैट। No site is a major site. यस सर, Okay. So do not, do not सो commit, आई शुड नॉट मेंशन दैट $100 million। do not mention. Those can. Sir, I wanted to ask something. Mhm. So like ये बजट ऐसा इसमें सबके पास बहुत फैक्ट्स एंड डेटा हो गए, लाइक इट इज अ फ्रेश टॉपिक। सर इन दिस लाइक हम एमएसएमईज में घुस गए। सो सर बट ऐसे तो हमारे पास कम से कम 15-20 पॉइंट है एंड वी हैव जस्ट 15 मिनट्स। सो सर जब हमारा चांस आए, सो कितने पॉइंट्स होने चाहिए सर? लाइक है तो बहुत सारे सर, और रिलेटेड चलिए नहीं हो गए, बट दूसरे टॉपिक्स के भी, लाइक आई सेड आई वांटेड टू ब्रिंग अ टॉपिक कि क्या चीजें महंगी हो गई, क्या सस्ती हो गई, आफ्टर द बजट। तो सर ये ऑब्वियसली एमएसएमई से थोड़ा अपार्ट है, बट देर आर मेनी, और सब बहुत पॉइंटर्स अभी भी लेफ्ट आउट है। Correct. हाउ टू, लाइक सर ऐसा भी लगता है ना सर, जितने पॉइंट्स बोलेगे उतने लाइक उतने पॉइंट्स तो मिलेंगे। points मिले नहीं, वो भी है, पर एट द सेम टाइम आदित्य, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो पूरे फ्लो को कैसे सपोर्ट करता है। कई वो लोग अच्छे पॉइंट्स बोलते हैं, लेकिन वो पूरा फ्लो डिसरप्ट कर देते हैं डिस्कशन का, कि एकदम बढ़िया चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, फिर एमएसएमई में आ गया, फिर प्राइवेट कंजम्पशन में आ गया, बढ़िया चला एकदम, आई रियली लाइक द फ्लो ऑफ द डिस्कशन, है ना? तुमने दो चार पॉइंट बोल के पूरा फ्लो डिसरप्ट कर दिया, तो तुझे फॉर एग्जांपल पॉइंट्स मिले भी और पॉइंट्स कटे भी। ओके। करेक्ट, सो बी वेरी केयरफुल एंड स्टार्ट में ही प्लान कर लो। मैंने कुछ लोगों का नोट किया कि भाई देव स्टार्टेड, देव टॉक्ड अबाउट देर आर 4 segments, आई थिंक यू वर द वन। यस सर। 4 segments, पुअर ही नहीं निकला सर, बताओ बाकी थी। युवा, नारी शक्ति, किसान, और क्या था चौथा? पुअर सर, हम लोग ऐसे सिंपल, गरीबी नहीं, वो ही दिमाग से निकल गया सबसे। है ना? तो नहीं, अभी अभी गरीबी दिमाग से भी क्या, जीवन से भी निकल जाएगा, अभी कॉलेज तो जाओ, तो सही हो जाएगा, सर टेंशन। व्हाट शुड बी आइडियल, लाइक टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए एक बार हमको पॉइंट मिले तो? 30 हमारे पास अगर पॉइंट्स है तो, आई एम नॉट सेइंग कि। मेरे हिसाब से 30-40 सेकेंड्स अप्रोप्रिएट है। ओके। 30-40 सेकंड में बढ़िया पॉइंट्स डाल के निकल जाओ, फिर एंट्री करो। ठीक तीन है, चार एंट्री सर, हाँ, लाइक। 3-4 फॉर एग्जाम्पल और से। सर कितनी एंट्रीज मैक्सिमम होनी चाहिए कि इससे ज्यादा करेंगे तो ऐसा लगेगा हम जीडी टेक ओवर कर रहे हैं पूरा? 3 से 4 एंट्रीज अप्रोप्रिएट है, 3 से 4 एंट्रीज करो। उसके बाद फिर जैसा अद्विका ने किया, थोड़ा बहुत इसको भी पॉइंट्स, इसको भी चांस दे देते हैं, थोड़ा उसको भी चांस दे सर देते उतना होता क्या है सर? ये तो टॉपिक अभी फ्रेश था ना, तो ऐसे इतने हैं। होते नहीं, भी और नहीं, हाँ बेसिकली एक एक्चुअली। इम्पोर्टेंट एलिमेंट वाज आल्सो टू इफेक्टिवली मूव फ्रॉम प्रोज टू कॉन्स। ठीक है, तो वो टाइमली मूव करा, नहीं तो लोग प्रोज ही करते रह जाएंगे। ठीक है, वो लास्ट 2-3 मिनट तक वो प्रोज ही डिस्कस कर। तो अच्छे से कोऑर्डिनेट करा देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर मौका मिले तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। ठीक है, डन। चलो, तो आई थिंक गुड टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, एंड सर। ये Sir, जीडी से सिलेक्ट हो जाएगी ना सर? क्या?
ये जीडी से सिलेक्ट हो जाएगी ना अगर आप सही होते कन्वेयर वाले होते। सर मेरे हिसाब से तो मोस्टली मोस्टली लोग सेलेक्ट हो जाएंगे इस वाले डिस्कशन के बाद, बट लेट्स कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू Sir, सो Yes. three questions, sir. गो अहेड। Sir, one is कि when you always you judge and you tell us कि group का flow बहुत अच्छा था, everyone was coordinating well, but वहाँ पे तो no one gonna coordinate ना, ये तो बहुत ही civilized setting है. So are we judged individually or are we judged like a group? So you are judged individually as well as a group. But so we should we put our point या फिर ऐसे group को साथ ले लेते चलो? अपना पॉइंट भी रखो और ग्रुप को भी साथ लेके चलो, ठीक है। टीम क्योंकि लीडर वहाँ पे विदाउट अ तो सब टाइटल। everyone's gonna cross each other. No one's gonna wait and be like, अच्छा fine, you go ahead. नहीं, people are like that who will tell you that you go ahead if they realize that you are adamant. Okay, so the point is that you have to go ahead and put your points across, है ना। पहले यात्री अपना मास्क खुद पहने, उसके बाद ऑक्सीजन मास्क दूसरे का लगाना है, खुद का पहले लगाना है, ठीक है। सो पुट इन योर पॉइंट्स अक्रॉस, और फिर थोड़ा सा टाइम मिले तो कोऑर्डिनेट भी कर दो, थोड़े ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे करो कि अच्छा स्माइल करो, ठीक है। समाज सेवा. बी प्रेजेंटेबल, हाँ मेरा पॉइंट्स तो मैंने रख ही दिया, अब चलो थोड़ा स्माइल कर लेते हैं, बी कॉर्डियल, ठीक है। रेस्पेक्ट एवरीबडी, अरे 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 ये भाई साहब ने बोला ही नहीं है, इनसे बात कराते हैं थोड़ी सी। तो आई थिंक दीज पॉइंटर्स कैन गिव यू द ब्राउनी पॉइंट्स ऑल्सो, और पॉइंटर्स तो तुमने अच्छे बोल ही दिए हैं, तो देन यू आर ऑब्वियसली सेट। सो आई थिंक And या sir, what is that? So certain people said कि capex बहुत ज्यादा है नहीं, capital expenditure और होना चाहिए था. What is your point of view on that? आपका personal opinion मेरे कि हिसाब और से होना चाहिए था कि ठीक है. मेरे हिसाब से मुझे भी यही लगता है कि जो जो केपेक्स है वो कम है। वो कम है. केपेक्स कम होने का रीजन यही है कि अपना फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट, हम्म. शेयर ऑफ टैक्सेस टू द स्टेट और डिफेंस, यही मिला के 50% हो जाता है। उसके बाद आप सब्सिडी निकाल दो उसमें से, और पेंशन्स निकाल दो, तो 10% और निकल गया, तो 60% वैसे ही चला गया। अब तुम्हारे पास बचा 100 में से 40 रुपए, बचे 60 रुपए, तो ऐसे ही चला गया। उसके बाद वो 40 रुपए में से तुम्हारे 16 रुपए ही ऐसे हैं जो तुम्हारा सेंट्रल, जो तुम्हारा सेंट्रल स्पेसिफिक जो स्कीम्स हैं, वो सिर्फ 16% है। मतलब सरकार 100 रुपए में से 16 रुपए ही खुद खर्च कर सकती है, So बाकी if you suggest where should we cut down or where could we cut down? आई वुड नॉट सजेस्ट कि कहाँ कट डाउन करना चाहिए। माई सजेशन इज दैट वी शुड फॉर एग्जाम्पल 2 3 थिंग्स। एक तो सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमें सब्सिडीज का कितना फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हमें सब्सिडीज का फायदा नहीं हो रहा है तो मे बी हम वहां से 1 2% निकाल सकते हैं, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर फॉर एग्जांपल हम जो अपना जो स्टेट प्लस सेंटर वाला जो स्कीम्स हैं उसमें हम 8% डाल रहे हैं, और स्टेट को हम 22% अलग से भी दे रहे हैं, सर करेक्ट। सब्सिडीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें फायदा मिल रहा है कि नहीं? अब गैस मिल रही है तो मिल रही है, खाना दे रहे हैं तो दे रहे हैं हम. नहीं तो आपको आपको कहीं ना कहीं से तो आपको कट लेना पड़ेगा। आपको एक साल फॉर एग्जांपल करके देखना पड़ेगा कि मैं इस साल सब्सिडी 6% की जगह 4% करता हूँ, एंड देन आई विल डेडिकेट, दैट इज नंबर वन। देन हाउ आर यू फॉर गरीब? हमने तो गरीब ओरिएंटेड बजट आप निकाला उसमें. या तो आप गरीब को देखो या आप सड़क बनाओ, आप दोनों नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप वो करोगे, या फिर दूसरी चीज आपका एक और इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, एंड दैट इज कि सेंट्रल प्लस स्टेट इन्वेस्टमेंट 8% है लगभग लगभग। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जो है वो काफी सारे स्टेट्स पे डिपेंडेंट है ना, वहां भी इलेक्शंस होते हैं। तो अब क्योंकि सरकार बहुत सारे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने मखाना के बारे में बात किया, हमने आईआईटी पटना के बारे में बात की, ये क्यों हो रहा है ये तो सबको पता है, करेक्ट। तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया आप फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू आर आप अगर वो 8% से अगर आप फॉर एग्जांपल 6% ही करते हो, 2% और फ्री होता, करेक्ट। सो आई थिंक, और आई वुड नॉट से कि कुछ गलत है, मतलब सरकार को भी फॉर एग्जांपल स्टेट्स के साथ थोड़ा समन्वय बनाने के लिए उनको भी कई बार प्लीज करना पड़ता है, एंड दैट इज समथिंग विच इज अंडरस्टैंडेबल। बट अगर निकलेगा तो यहीं से निकलेगा, और कोई तरीका नहीं। तरह से पॉलिटिकल एंगल हमको अवॉइड करना चाहिए ना वाइल पॉलिटिकल आंसरिंग। एंगल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पॉलिटिकल एंगल इज नॉट समथिंग विच वी शुड रियली टॉक अबाउट इन अ डिस्कशन लाइक दिस, करेक्ट। कि आप And फॉर एग्जांपल
पलटू चाचा का रेफरेंस ले आ रहे हो, वो सब नहीं करना है. दैट्स नॉट समथिंग व्हिच इज एडवाइजेबल. एंड सर, डू यू थिंक हमें को डिसइन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए पीएसयूज का जो प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर सो पीएसयूज के केस में आई थिंक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बट द प्राइमरी रीजन व्हाई वी आर डूइंग इट इज इफेक्टिवली द बोरोइंग्स. जो बोरोइंग है वही रीजन है. अगर आप बोरोइंग को अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है. लेकिन अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, देन व्हाई नॉट? वी आर अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी. तो बिकॉज वी आर नॉट अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी. We are not a capitalistic. हम कैपिटलिस्ट नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट. We're a mixed economy, sir, I would say. हाँ, मतलब we are a mixed economy, but we also look for profit, no? So if the But PSUs are not profitable, it's not helping anyone, is it? the government is not looking for profit, Advika. ठीक है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट. Social welfare. So the idea is, whether if it is profitable or not, आपको उसको लॉस में भी चलाना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल उसको प्राइवेट में डाल दोगे तो फिर द कॉमन पीपल आर गोइंग टू सफर. Example, railways, sir. Like, एग्जांपल रेलवे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. what is the main अगर आप example? रेलवे को प्रायोरिटाइज कर दोगे तो फिर आपका कुछ नहीं बचेगा, फिर लोग कहीं कोई नहीं जा पाएगा. ठीक है. सो देन इट्स ऑल गॉन. फिर आप फॉर एग्जांपल द पुअर विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल ओनली. सर रेलवे अपनी टिकट में बेचारों के लिए लिखते भी हैं कि वी ओनली रिकवर अबाउट 57% ऑफ द कॉस्ट. करेक्ट. तो सो बेसिकली दैट्स द पॉइंट. एंड इन फैक्ट राइट नाउ आप अगर देखोगे तो रेलवेज में भी बहुत सारी चीजें हैं. अब जैसे रेलवे के अंदर जो आपके स्नैक्स होते हैं, ठीक है, उसमें काफी सारा एस्पेक्ट अब प्राइवेटाइज हो गया है. या तो आईआरसीटीसी करता है, या आईआरसीटीसी के अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर नाउ कमिंग इनटू दैट सेगमेंट. Tender हो रहा है उसके भी. Yes, sir. Correct. So that is also something which is happening at this point in time. But yeah, for some very important segments, I do not believe private investment is a very good idea. And so for Excel GDP, when can we have Excel specific GDP? क्योंकि उसमें केस मिलता है ना, like it is like Excel GDP. GD, sorry, Okay. group discussion. So Excel GDP, Advika, if you actually go through the first GD that we had done was actually an Excel GD. And primarily, what you should do is just go through. So there are some key roles that are there. Okay. Just go through those roles. You are anyways playing those roles only in a group discussion. Just that you don't know the name of that role. That's it. My perspective was they have a case study. They don't usually have a topic. No. So basically, we have done case study GD also. So in fact, For SPJ. No, not for SPJ. In fact, two GDs back, we had a case-based GD. हमने एक केस बेस्ड जीडी किया था. Okay. है ना. तो अब आप 2 सेशन से आप जाग गए हो, तो अभी आने वाले में भी फिर से करेंगे केस बेस्ड जीडी. Okay. Thank you. All right. चलो. So everybody take care. We will meet up again very very soon. God bless and bye bye.